Hello and welcome to MS Classes. This is your host Mohammed Saklan, and from this video onwards we will be having series of world mapping. और सबसे पहले जो हम कॉन्टिनेंट करने जा रहे हैं दैट इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया जो it was discovered by Gibson, whereas the other part of it, which is called as Tasman, it was discovered by Tasmania. So Tasmania was discovered by Tasman, whereas Australia was discovered by Gibson. अगर हम पॉलिटिकली इसको डिवाइड करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है 6 स्टेट्स और 2 इंटरनल टेरिटरीज में डिवाइडेड है. तो 6 जो स्टेट्स हैं वो ये हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. सो दिस इज द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो अगर हम देखें नॉर्दर्न साइड पे इसके इट इज डिवाइडेड, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पपुआ न्यू गिनी. यहाँ पे है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पपुआ न्यू गिनी बाय टॉरेस स्ट्रेट. अब अगर हम ईस्ट वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये इट इज बाउंडेड बाय टाइमोर सी, then from in the northern side by Arafura Sea. Then we have this gulf called as Gulf of Carpentria. Then it is separated from Papua New Guinea by Torres Strait, and on the eastern margin we have Coral Sea, and of course Pacific Ocean. So politically we have divided this particular Australian continent into 6 states, or Australian country into 6 states and 2 internal territories. So 6 Australian states are Western Australia, Southern Australia, Queensland, New South Wales and Victoria, and Tasmania. Whereas 2 internal territories are Northern Territory and Canberra, which is its capital. So अब हम करेंगे इनकी स्टेट्स एज वेल एज देयर कैपिटल्स. सबसे पहले हमने देखा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी कैपिटल पर्थ है. देन वी हैव नॉर्दर्न टेरिटरी, इट्स कैपिटल इज डार्विन, which is also called as entry gate of Australia. एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे तो वी हैव इट्स कैपिटल एज एडिलेड. देन वी हैव क्वींसलैंड, उसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन, which is also known for Ipswich coal reserves. Then we have in Queensland we have an area called as Weipa, which is known for its bauxite deposits. So Weipa, WEIPA, Weipa. अब साउथ की तरफ चलेंगे तो वी हैव न्यू साउथ वेल्स, जिसकी जो कैपिटल है दैट इज सिडनी, which is also the largest city of Australia. And moving down we have Victoria, जिसकी कैपिटल मेलबर्न है, which is also known from this Melbourne cricket stadium that we know. Then we have this Tasmania, which is separated from the mainland Australia by a strait called, is very important strait, we have Bass Strait, BASS Strait. तास्मान की बात करें, तास्मानिया की बात करें, which was discovered by Tasman, its capital is Hobart, and it is known for apple production. Now this is, so again let's revise. So we have 6 states and 2 internal territories. 6 states we have Western Australia, Southern Australia, then we have Queensland, New South Wales, Victoria and Tasmania. And 2 internal territories we have Northern Territory and Canberra, which is also its capital. Then Western Australia की कैपिटल हमारे पास पर्थ है, Northern Territory की डार्विन है, which is also the entry gate of Australia. Southern Australia की कैपिटल हमारे पास एडिलेड है. Then we have Queensland, इसकी है कैपिटल ब्रिस्बेन, which is known for Ipswich coal reserves or areas. New South Wales की बात करें, इसकी कैपिटल हमारे पास आ जाती है सिडनी. Then we have Victoria, जिसकी कैपिटल मेलबर्न है. Then we have Bass Strait, which is dividing Australia, mainland Australia and Tasmania. Tasmania की कैपिटल Hobart, which is known for its apple production. Then we separated Australia from other continents. In the northern side we have, northwestern side we have Timor Sea, so we can write it as TACTC.
So T, A says Timor Sea, A for Arafura Sea, C for Gulf of Carpentria, T for Torres Strait, divides which separates it from Papua New Guinea. Then we have Coral Sea, and here we have Indian Ocean, and on this side we have Pacific Ocean. I hope it is clear. Now moving towards its the uh, now moving towards its physical mapping. In physical mapping, we will be taking 2 to 3 things in consideration: mountain ranges, then we have rivers, then we will also see deserts and other physical features. Okay, now let's see. So we just wrote TACTC. We have Timor Sea, and we have Arafura Sea, then we have Gulf of Carpentria, then we have Torres Strait, we have Coral Sea. This peninsula is called as Cape York Peninsula. Now firstly we will do the mountain ranges. So mountain ranges of Australia. So we have Great Australian Divide, Great Australian mountain ranges. So Great Australian dividing mountains. Okay, then we have a mountain range here called as Flinders, Flinders. Okay, here we have a mountain range called as Selvia Mountains. Then we have 2 mountain ranges here, 3 here and 1 here. These 3 we call as DVH. We have DVH, Darling, Victoria and Harshley. So these 3 mountain ranges we call as Darling, Victoria and Harshley. And if we move towards its north, we have this mountain range called as Hampshire. Okay, then these 2 mountain ranges we call McDonnell and Musgrave. Mountain ranges, which are known for uranium deposits. So we did Great Dividing Mountains, Flinders, then we have this Selvia, then we did DVH, that is Darling, Victoria and Harshley, then we did Hampshire, then we did M, one is Musgrave and one is McDonnell. So these are the mountain ranges of Australia. Now moving towards its deserts. So deserts की अगर हम बात करें तो we have 2 deserts here, 2 deserts here and 2 deserts here. So this is G and this is T. This is S, this is S. Okay, this is G and this is
V. So G is Great Sandy Desert. Great Sandy Desert. Then we have Tanami Desert. Tanami Desert. Then we have Simpsons Desert. Then we have Stony Desert. दिस इज गिब्सन, ये वही गिब्सन हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था. देन वी हैव विक्टोरिया. विक्टोरिया एक डेजर्ट का नाम भी है और एक माउंटेन रेंज का नाम भी है. सो वी हैव डन डेजर्ट्स ऑल्सो. कौन कौन सा डेजर्ट? GTSS एंड GV. दैट इज दिस इज ग्रेट सैंडी डेजर्ट. Then we have Tanami Desert. We have Simpson. We have then we have Stewart Sandy. Then we have Gibson. Then we have Victoria. Okay, so we have done mountain ranges and as well as the deserts. Then moving ahead, let's move towards our next feature, that is rivers. अब rivers की बात करें तो we have a very important river flowing here called as Fitzroy. Fitzroy. ये इसलिए important है because Tropic of Capricorn cuts, so it cuts Tropic of Capricorn twice. अब फिट्जरॉय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक और जो दो नाम की फिट्जरॉय नाम की दो रिवर्स, एक ईस्टर्न साइड पे और एक वेस्टर्न साइड पे. फिट्जरॉय. तो हम रिवर्स की बात कर रहे हैं. पहला रिवर हमने करा फिट्जरॉय. दूसरा रिवर जो हम करेंगे that is Darling and Murray. So this is Darling River. It enters Murray. Okay, so these two rivers are very important rivers. और पर्थ के बीच में एक रिवर जाता है पर्थ से होके, जिसे हम कहते हैं Avon River. So we have done Fitzroy that cuts Tropic of Capricorn twice. Then we have another Fitzroy. Then we have Darling and Murray. And finally we have Avon, जो पर्थ से होके जाता है. पर्थ, which is the capital city of the Western Australia. So these were very important physical features with respect to the physical map of Australia. Some other important things are, for example, we have a lake called as Disappointment Lake. Disappointment Lake. Tropic of Capricorn passes through it. Here we have Alice Springs. यहाँ से भी Tropic of Capricorn गुजर के जाता है. Alice Springs, it is part of Northern Territory. So I think then we have plateaus also, some important plateaus. We have very important plateau. We have Kimberley Plateau here. Kimberley Plateau, famous for diamond reserves. So famous for diamonds. So I think another important plateau is Ahmland. Arhmland. It is famous for Uluru rocks. Uluru rocks जो चेंज करते हैं कलर. तो अलग अलग वक्त पे, दिन के अलग अलग वक्त पे अलग अलग कलर्स होते हैं. So we have done Australia,
from its political and well as physical perspective. Political perspective से हमने जब किया तो उसको 6 स्टेट्स और 2 इंटरनल टेरिटरीज में डिवाइड किया और उनकी अलग अलग कैपिटल्स की भी हमने बात की। उसके बाद जब हमने फिजिकल मैप को पढ़ा तो हमने डिवाइड किया इसको 2 पार्ट्स में, वन इज द मेनलैंड एंड अदर इज सेपरेटेड बाय बास स्ट्रेट। नॉर्थ में हमने TACTC को हमने किया, टिमोर सी, आरफूरा, गल्फ ऑफ कार्पेंशिया, टॉरेस स्ट्रेट एंड कोरल सी। फिर उसके बाद हमने बोला यहाँ पे पेनिनसुला, दैट इज केप यॉर्क पेनिनसुला। फिर उसके बाद हमने ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इसे कहते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज यहाँ पे एक विंड ब्लो करती है जिसे हम डॉक्टर विंड कहते हैं, डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड। और यहाँ इस एरिया में एक विंड ब्लो करती है जिसे हम कहते हैं ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर विंड। ओके, देन हमने फिजिकल जब मैपिंग हमने की तो हमने डिवाइड किया ऑस्ट्रेलिया को विद रिस्पेक्ट टू इट्स माउंटेन्स। वी हैव ग्रेट ऑस्ट्रेलियन माउंटेन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिवाइडिंग माउंटेन, जहाँ पे सबसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा माउंटेन जो है वो है हम उसके लिए किस किसक्यूको, किसक्यूको, KISCYCKO, सबसे ऊंचा माउंटेन जो है। जैसे हमारे यहाँ पे एशिया में सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज जो है, माउंटेन जो है माउंट एवरेस्ट है, तो इस तरफ ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा है दैट इज किसक्यूको। देन हमने और कौन से पढ़े, हमने पढ़ा दिस फ्लिंडर्स, Salvia, then we have this McDonnell and Musgrave, then we have DVH, that is Darling, Victoria and Harshley, then we did also Hampshire। उसके बाद हमने अगर उसकी डेजर्ट्स की बात की तो डेजर्ट्स में हमने पढ़ा ग्रेट सैंडेड GT, SS और GV, ग्रेट सैंडेड डेजर्ट, टनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट एंड विक्टोरिया डेजर्ट। जब हम रिवर्स की हम बात कर रहे तो हमने फिट्जरॉय विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। उसके बाद हमने डार्लिंग एंड मुरे, एंड वी डिड आल्सो फिट्जरॉय एंड एवॉन जो पर्थ से होके जाता है। और 2 चीज़ें हमने क्या की, दस ब्रिक फिल्डर ड्राई विंड जो कि ब्रिक्स को जल्दी सुखा देती है, देन वी हैव डॉक्टर विंड। सो दिस वाज द एंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स मैपिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर ली हैं। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।